अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार कसाना। आज बहुत ही दिल दुखा हुआ है और वो इसलिए दुखा हुआ है कि हमारे कनाडा में यहाँ पे लंदन ओंटारियो एक जगह है जहाँ पे एक ऐसा वाक़या हुआ है जिसने पूरे के पूरे मुल्क को हिला के रख दिया है। और हुआ यूँ है कि एक पाकिस्तानी फैमिली को एक वाइट जो आदमी है, 20 साला लड़का है, उसने अपने ट्रक के ऊपर उसने ट्रक चढ़ा दिया उनके ऊपर और उनकी डेथ हो गई। 4 लोगों की डेथ हो चुकी है, एक छोटा-सा बच्चा जो है वो बचा है और वो भी सीरियसली इंजर्ड है। और इस वाक़ये ने पूरी कम्युनिटी को हिला के रख दिया और इसी का आज हम ज़रा तज़िया करेंगे। नॉर्मली आपको पता है मैं बहुत कम कैनेडियन इश्यूज़ के ऊपर बात करता हूँ, लेकिन ये इस तरह का इश्यू है कि जिसके ऊपर मुझसे रहा नहीं गया और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी कम्युनिटी जो हमारी लंदन ओंटारियो में है, उनसे ज़रा बात की जाए और उनसे पूछा जाए कि वो इस वक़्त इस सदमे से कैसे कोप कर रहे हैं, क्योंकि ये कल का वाक़या है और आज हमने अखबारात में इसको पढ़ा। तो उनसे बात करते हैं, चलते हैं लंदन और सबसे पहले बात करते हैं तारिक भट्टी साहब के साथ, जो कि वहाँ की कम्युनिटी के बड़े इम्पोर्टेंट और पाकिस्तान कैनेडा एसोसिएशन के इस वक़्त एग्ज़ीक्यूटिव भी हैं और काइंड ऑफ प्रेज़िडेंट भी हैं। और इनके साथ तशरीफ़ रखती हैं शाह यूसुफ़ज़ई साहिबा। शाह इज़ previously actually she was the president of PCA, Pakistan Canada Association, और वेरी एक्टिव इन द कम्युनिटी माशाल्लाह और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं इनसे भी आपकी बात करवाऊंगा। और फिर इनके साथ तशरीफ रखती हैं यास्मीन खान साहिबा एंड यास्मीन खान इज आल्सो वेरी एक्टिव इन द कम्युनिटी। और आज जब से ये वाकया प्रेस में रिपोर्ट हुआ है उस वक्त ये मुतअद्दिद इंटरव्यूज दे चुकी हुई हैं और मुख्तलिफ लेवल्स पे बात कर रही हैं किस तरीके से ये मामला जो इनको कोप किया जाएगा। टू स्टार्ट विद तारिक भट्टी साहब, सबसे पहले तो मेरी कॉन्डोलेंसेस एक्सेप्ट कीजिए। आपकी कम्युनिटी के ऊपर लंदन ओंटारियो में बहुत बड़ा ये एक सदमा है और मुझे पता है यू आर इन अ शॉक। और इस वक्त एज वी स्पीक आपके घर में कई लोग मौजूद हैं जो आपके साथ कॉन्डोलेंसेस के लिए आए हुए हैं, लेकिन आपने वक्त निकाला और हमसे बात की। तारिक साहब जरा बताइएगा कि इस वक्त क्या सिचुएशन है, ये वाकया हुआ किस तरह है? जी, अस्सलाम वालेकुम किसान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और ये पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि सिर्फ लंदन कम्युनिटी नहीं, ये हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी एंड एट लार्ज मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। ये वाक़या कल शाम का है और ये फैमिली, बदकिस्मत फैमिली, शाम को बड़ा अच्छा मौसम था, सैर के लिए निकले और उनको नहीं पता था कि ये उनकी आखिरी सैर होगी। तो ये फुटपाथ पे चल रहे थे, जिस तरह के एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स को काम करना चाहिए। तो एकदम ये परपेट्रेटर आया, अपने पिकअप ट्रक में था और वो उसने पूरा गियर पहना हुआ था, वो पूरी प्लानिंग करके आया मेरी इत्तला के मुताबिक। तो उसने ट्रक अपने इस बदकिस्मत फैमिली पे चढ़ा दिया और बस उसके बाद का सारा वाक़या आपने अखबार में देख ही लिया है, जो रिपोर्टिंग हुई है। और वो पुलिस ने जो कुछ कार्रवाई की वो भी सब कुछ आप लोगों ने देखी है। तो इट्स वेरी वेरी वी नेवर थॉट कि समथिंग लाइक दिस विल हैपन इन लंदन। और इसमें ये है कि अभी तक इट्स लिटरली शॉक एंड ऑ की सिचुएशन है। वी आर स्पीचलेस, वी डोंट नो व्हाट टू से while keeping the privacy of the family as well। एक अनफॉर्चुनेटली ऐसा इंसिडेंट है जो कि हम अखबारों में पढ़ते रहे, मीडिया में देखते रहे, लेकिन when the reality hits your home then you realize के how serious it is। और हम मीडिया के साथ और अथॉरिटीज को हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि डोंट जस्ट कॉल इट अ हेट क्राइम, इट्स एन एक्ट ऑफ टेररिज्म। इफ दिस इज नॉट द टेररिज्म देन व्हाट इज द टेररिज्म? सो इसको अंडर टेररिज्म लॉज ही इसकी सारी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसकी सारी प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। I spoke with few politicians and maybe they felt bitterness in my voice, but I told them categorically, I said, I don't need your stereotype, typical cliche words. If you are not with us calling it act of terrorism, then, I mean, then you really, your condolences, your words are not good enough for us. They're just empty words. We want the authorities to know, then they're just empty words. So हम ये चाहते हैं कि हम अपनी आवाज मिलके सिर्फ लंदन ओंटारियो से नहीं, पूरे कनाडा से, पूरी दुनिया से लोगों को बताएं। और ये एक स्टीरियोटाइपिंग बन गई है। अगेन मैं भी वही बात कह रहा हूँ कि जस्ट रिवर्स द नेम्स, रिवर्स इट। एंड अभी तक हर तरफ शोर मच गया होता कि ये टेररिज्म है, टेररिज्म है। क्या टेररिज्म सिर्फ मुस्लिम नेम के साथ एसोसिएट होना रह गया है? दिस इज अ बारबैरिक एक्ट एंड दिस इज एन एक्ट ऑफ टेररिज्म।
and that's how we want it, and we are mourning this loss, but we don't want this loss of 4 lives to go waste. हम अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस फैमिली को किसी बहुत बड़े मकसद के लिए चुना है, और वो मकसद यही है कि ये 4 जानें जो उन्होंने जो शहीद हुए हैं, इनके जरिए से हम अवेयरनेस लेके आएंगे पूरे कनाडा में और बताएंगे लोगों को कि ये टेररिज्म किसी भी कम्युनिटी के साथ कहीं भी हो सकता है. It's the perpetrators are there, and we want to investigate it thoroughly. We don't know how many more Nathaniels are percolating there, so we need to go and find out the root cause and try to search them. अच्छा, ये तो आपने बड़ा अच्छा कहा, आपने उनसे बड़ा ब्लंटली बात की है. शाह, व्हाट इज योर रिएक्शन? क्योंकि मैं आई एम शोइंग यू द स्टोरी बाय CBC, और जिसमें वो बता रहे हैं कि मुस्लिम फैमिली मेंबर्स टारगेटेड इन फेटल हिट एंड रन, पुलिस से ड्राइवर चार्ज विद मर्डर. ये हिट एंड रन को तो इसको हम देख रहे हैं, बट डू यू थिंक आर दे, बिकॉज इसमें इस स्टोरी में उन्होंने जो डिप्टी इंस्पेक्टर हैं पॉल वेट, he has quoted as saying that there is evidence that this was a planned, premeditated act and that the family was targeted because of their Muslim faith. So आगे जाके वो कह रहे हैं कि this is a devastating loss of 4 members of our community, added police chief Williams. अब ये जो है, अब इसमें लग तो ये रहा है कि they are actually inclined towards accepting it as a terrorist attack. Do you think, are they gonna accept it? So I do think that it's good that we are calling it an act of terrorism. I think that's the first step towards calling out Islamophobia around us. And there's, terrorism doesn't know any race or religion. This is an act of terrorism, just plain and simple. Right. So I'm hoping that the police services, they conduct this investigation thoroughly and without any bias. And I trust that they will do so and give the community and the family the justice that they deserve. Inshallah. I think the other thing that this tragedy has kind of brought to light is that Islamophobia and white supremacy and hate against minorities is not, it's alive and it's in our cities, it's in our neighborhoods. And we tend to, when we hear stories about this happening in other countries, sometimes we hear about it in America and we think, oh, this is like an American thing that happens, but we've now come face to face with it and it's in our backyards, it's happening. And right. I think that's a big wake-up call for our community. And I'm glad that it's good to see people across generations from different backgrounds are speaking up about this and calling it terrorism, because that's what it is. Right. Yeah. So Yasmin, आप तो उनसे मिलती रहती हैं, उस फैमिली से मिलती रही हैं, और what's your reaction? Because you know the family, and you were telling me before the interview that you know them, and they were very nice and very kind people. Yes, I still can't believe it, Uncle. I woke up in the morning and I found out, and we just went and sat at their house, and that's where we got our peace. Their happiness was here and everything like that. They spent so much time making their garden, and my mom was just there, and they're like, "Ye pool, ye hamari beti hai." It's a shock, but I'm really happy that and inshallah this gets recognized in act of terrorism, and we can all reunite, and we can all not unite as Muslims and Pakistanis or whatnot. Right. That's not the thing anymore. We need to unite as humanity. We need to be together. We need to build. We need to be stronger together, and that's the main message. And I know my I call them my brother and sister. I know my brother and sister would have vouched for the same thing. They would have told me, Yasmin, tum aise, and you need to say this. You need to do this. I know they would push me, and they would say that we need to unite as humanity. At the end of the day, these labels, they don't matter, because Allah subhanahu wa ta'ala will look at us, and He will judge us for what we've done for our community, for humanity. Absolutely. Yasmin, you're so right. But this, you see, we have to think beyond the Pakistani community, because this is not just Pakistanis, right? So we have to create alliances with different communities of Muslims, Yes. क्योंकि इसके अलावा आप कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आप सिर्फ पाकिस्तानीज़ के ऊपर फोकस करेंगे तो वो भी बहुत कम है. So we have to take it as an Islamophobic attack or a terrorist attack. तारिक भट्टी साहब, आपका क्या ख्याल है कि being the very active member of the community,
آپ اس کو کیسے اب لیके آگے پرسو کریں گے؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف کینیڈا کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پوری دنیا میں اسلاموفوبیا ایک بہت بڑا ایشو بن چکا ہوا ہے, جس کو ہم پوری دنیا میں آئے دن دیکھتے رہتے ہیں. ہر جگہ پہ آپ کسی بھی کنٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں, ویسٹ میں خاص طور پہ مسلمز آر بینگ ٹارگیٹڈ, اور ڈیلیبریٹلی ٹارگیٹڈ. یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسی کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, دے آر ڈیلیبریٹلی بینگ ٹارگیٹڈ. تو اب آگے کیسے بڑھنا ہے؟ جی بالکل بجا فرمایا آپ نے کسانہ صاحب. یہ پچھلے کچھ عرصے سے جو ایکسٹریمسٹ طاغوتی طاقتیں ہیں وہ ان کا غلبہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے, گورنمنٹس لیول پہ بھی اور میسز میں بھی. اور یہ صرف لمحہ فکریہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, ایون ایوری ویزیبل مائنورٹی از فیلنگ دیٹ. اور اس کے اندر ہم دو چیزیں کر سکتے ہیں. ایک تو ہم جب ایز اے مسلم جس سوسائٹی میں بھی رہیں, وی ہیو ٹو مرج اینڈ وی ہیو ٹو شو پیپل دیٹ what kind of people we are. ہمیں اپنے کیپسول سے باہر نکلنا چاہیے, ہمیں لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے, ملنا جلنا چاہیے. اور سیکنڈلی یہ ہے ایجوکیشن. ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ. بٹ ایک چیز میں سمجھتا ہوتا تھا کہ جو ہماری نیکسٹ جنریشنس ہیں ریگارڈلیس آف کلر وہ they will be better educated. But this young man was only 20-year-old, اور پتہ نہیں اس کے اندر کہاں سے اتنی ہیٹ آ گئی کہاں. اسی لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہو کہ وہ کہاں سے امپریس ہوا, وہ کون سی کلاسز اٹینڈ کر رہا تھا, کس کی تھاٹس کو وہ فالو کر رہا تھا. تو ایک انڈیویجول کی پنشمنٹ کی بات نہیں ہے, ہمیں جو یہ وائٹ سپرمسٹ کا جو پوری تھاٹ پروسیس ہے ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے, اس کی روٹ کاز کی طرف جانا چاہیے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نہ صرف ایز اے مسلمان متحد ہوں, تمام ویزیبل مائنورٹیز کو. آپ نے جیسے کہ دیکھا ہوگا تھوڑا عرصہ پہلے جو بلیک لائف میٹرز جو ایک بہت بڑی موومنٹ چلی, اور وہ لوگ بھی بڑے عرصے سے سفر کر رہے ہیں. تو ہم جتنے بھی, یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تمام وہ جو پسا ہوا طبقہ ہے, چاہے وہ کسی بھی رنگ سے ہو, نسل ہو, ان سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. لیکن انفارچونیٹلی مسلم شاید آج کل ایزی ٹارگیٹ بنے ہوئے ہیں. ہمیں اپنی صفوں میں بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کی کیا وجہ ہے. ہمارے اندر شاید اتحاد کی کمی ہے, ہمارے اندر ایکشن کی کمی ہے. تو ہمیں اس کو دونوں اینگل سے دیکھنا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا شاہ, آپ ذرا مجھے بتائیں کہ ہم جب یوتھ کی بات کرتے ہیں, اسپیشلی جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے, تو ہم کہتے ہیں یار وہ تو ٹین ایجر تھا, ہی واز ینگ, چلیں چھوڑیں اس کے اوپر کیا ہم نے وہ کرنا ہے. تو وہ لوگ اس کے اوپر بات ہی نہیں کرتے ہیں. بٹ کسی یہاں پہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کمیونٹی کا کیا رول ہے, پلس گورنمنٹس کا کیا رول ہے, فیڈرل گورنمنٹ کا اور آپ کی جو پروونشل گورنمنٹ ہے ان کا کیا رول ہے. کیونکہ جس طرح طارق بھٹی صاحب نے کہا کہ کہیں نہ کہیں سے تو وہ انسپریشن لے رہے ہیں نا, وہ چاہے اسکول سے لے رہے ہیں, چاہے سوسائٹی سے لے رہے ہیں, چاہے کسی بھی گروپ سے لے رہے ہیں. تو دس از سم تھنگ ویری سیریس. اب فرینکلی میں آج سوچ رہا تھا کہ میں اب فیملی کے ساتھ باہر جاؤں, اپنی سیر کے لیے جاؤں کہ نہ جاؤں. ٹھیک ہے نا, دیٹ از ہاؤ دا کمیونٹیز آر اسکیئرڈ ناؤ. واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ So I totally agree. I think everybody, especially in the London community, I will say also the Pakistani community in London is a very tight-knit group. It's a large community. There's over 500 Pakistani families in London, and there's many generations of Pakistanis in London, but it's very tight-knit. And so everybody is feeling this very personally, and everybody is a little on edge and living in a little bit of extra fear right now. So like you said, we have so many community members who openly are hijabis, you know, our aunties, and even in our own families, we have openly hijabi women who are now, I'm hearing from my friends that their moms are scared now to go out, and they wear shalwar kameez, and they, you know, they are very open about their culture, and it's just not, and everybody's a little bit more scared tonight doing that. So you're right that it has affected the whole community. I think to the other part of your question, for the government and for public figures, I think right now the most important thing is to stand with our community, and not just in these, you know, there's a lot of messages of condolences and a lot of support coming in from the rest of the public community, but I think that some concrete action needs to be taken. I think we need to really reflect on representation in our government. There's, you know, there's no denying that Islamophobia and hate crimes against Muslims have gone up in the last little while, and they've actually gone up disproportionately to hate crimes against other races and other religions.
So I think that the government needs to look at the statistics and needs to reflect in their own representation. Increased Muslim representation. There are a lot of really good Muslim resources out there to be sharing and to be elevating Muslim voices in the media as well. I think that's really important. And then also back to Tariq Uncle's comment about education systems. I'm a future teacher. I'm in Teachers College right now, and this is making me think a lot about how students from a very young age are kind of indoctrinated to think of Muslims and Pakistanis, or they see people a certain way. There's certain stereotypes that are perpetrated in schools and in the media. And I think it's really important to tackle those things from a young age and not be scared of upsetting other people because of, elevating some voices and talking about these issues that we're so uncomfortable talking about. Because at the end of the day, it's on us as elders and as people leading the youth and the next generations on. Like it's really on us to change those stereotypes and those ways of thinking. तो शम्स सैयद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया जी. शम्स साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आप भी लंदन ओंटारियो से ही हैं और आप भी पाकिस्तान कनाडा एसोसिएशन के बड़ी इंपॉर्टेंट स्लॉट पे आप बैठे हुए हैं माशाल्लाह. और मुझे ये बताएं कि आपका क्या ख्याल है इस पूरी सिचुएशन में. जिस तरह बाकी लोग आज थोड़ा सा बाद में ज्वाइन किया, लेकिन हम बात यही कर रहे हैं कि जो आज हम पढ़ रहे हैं ये वाकयात और जो हुआ है कल का वाकया, उसके बाद अब आगे बढ़ना कैसे है, कैसे कम्युनिटी को तसल्ली भी देनी है, उनको गाइड भी करना है, एजुकेट भी करना है. और चूंकि पाकिस्तान कनाडा एसोसिएशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो आपका क्या प्लान है जी? ये सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम. मैं देख रहा था शाह, यास्मीन, तारिक भट्टी साहब, हम लोग सारे जो है वी वर्क टुगेदर. देखें, जहाँ तक ये है कि लंदन जो है, मैं पिछले 20 साल से ज़्यादा लंदन में रह रहा हूँ. लंदन के अंदर एक बड़ी ड्रास्टिकली चेंज आ रही है जो कि डोमिनेशन है इस वक्त. एक मीडिया ने कहा 25,000, हम लोग 40,000 से ज़्यादा जो है मुसलमान यहाँ पे हैं, विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक मोर देन 12% ऑफ द पॉपुलेशन. और दूसरी तरफ ये है कि मैं इसको दो हिस्सों में तकसीम करूंगा. एक तो ये है कि पाकिस्तानी, डेफिनेटली हमारी रूट्स है पाकिस्तानी और हम अपने साथ इसको लेके चलते हैं. और दूसरा है मुस्लिम्स का. तो आज सुबह से मैं लंदन पुलिस और मेयर और लंदन मुस्लिम मास के साथ सारा दिन जो है, भट्टी साहब की कहीं और मसरूफियत थी तो मैं वहाँ पे था. हमने सारी मीटिंग अटेंड की. एक चीज जो मेरा क्वेश्चन मार्क है और मैं जो बात ये करना चाह रहा हूँ, और ऑफ द रिकॉर्ड वाली होती है लेकिन अब तो ये मीडिया पे बात हो रही, कि एक दिन के अंदर उन्होंने इस चीज को डिटरमिन कर लिया कि इट वाज ए टारगेट एंड इट वाज प्री प्लान विदाउट इवन गोइंग टू द कोर्ट. तो इसका मतलब देयर इज ऑलवेज सम रूट्स बिहाइंड इट. सबसे बड़ा फियर इस वक्त जो मुझे नजर आ रहा है एज ए पाकिस्तानी कम्युनिटी मेंबर, और जैसे मेरे घर के अंदर शाह को भी पता है, हम लोग हिजाब का भी कॉन्सेप्ट है, वॉक पे भी जाते हैं, सारी चीजें. अगर कोर्ट में जाने से पहले एक चीज डिटरमिन होगी है कल रात ही को कि ये जो है ऑलरेडी डिजाइन था, इसका मतलब इसके पीछे कोई ना कोई रूट्स हैं. और अगर ये रूट्स हैं तो इस अ फियरिंग, इट्स अ बिग फियर फॉर अस. बहुत ये है कि जो भी बच्चे बाहर जाते हैं, फैमिली जाती है जो जिनके ऊपर ये टैग लगा हो कि वो मुसलमान हैं, डजंट मैटर वो पाकिस्तानी हैं या नहीं हैं, तो इसे दे आर टारगेटेड. उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा हमें ये करना चाहिए कि जैसे भट्टी साहब ने कहा कि हमें इसकी रूट कॉज पे जाना चाहिए कि ये कहाँ से हुआ. बगैर कोर्ट में गए उन्होंने ये कह दिया कि इट वॉज ए टेररिस्ट. वो मान रहे या नहीं मान रहे कि इट वॉज टारगेटेड, इट वॉज ऑलरेडी प्री प्लान. तो इसका मतलब है कि इसके पीछे कोई ना कोई चीज़ है. तो सबसे बड़ा जो फियर हमें यहाँ पे लंदन में इस वक्त है वो ये है कि वी हैव बीन टारगेटेड, व्हाट काइंड ऑफ प्रोटेक्शन वी आर गेटिंग. और दूसरा ये है कि हमें इसके ऊपर थोड़ा सा अवेयरनेस देनी चाहिए, और अगर ऐसी चीज़ है तो उसको गवर्नमेंट लेवल के ऊपर डेफिनेटली उसको ख़त्म करना चाहिए. टैग लगा देना कि जी मुसलमान हैं और टेररिस्ट हैं. एक दो पहले भी यहाँ ऐसे केसेस हुए जो लंदन मुस्लिम मास के सामने हुए थे. आई डोंट वांट टू से दैट. तो ये चीजें यहाँ पे चल रही हैं. और ये पहले हमने यहाँ पे अल्बर्टा में भी देखा, पिछले अभी रिसेंटली हमने अल्बर्टा में भी इस तरह के वाकया देखे हैं. लेकिन यास्मीन, आप बीइंग यूथ के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल वो प्ले कर सकती है, क्योंकि देखें ये भी ही वाज अ यूथ आल्सो, 20 इयर्स ओल्ड. इट्स नथिंग. मतलब अब 20 ईयर में तो आप कुछ सोच ही नहीं रहे होते हैं कुछ और चीज, लेकिन इतनी, जिस तरह तारिक भट्टी साहब ने शुरू में कहा कि इतना हेट फिल्ड आदमी एट द एज ऑफ 20,
It's unbelievable. تو آپ چونکہ بتائیں کہ یونیورسٹیز میں, کالجز میں کیا اس طرح کے واقعی کوئی ایکسٹریم نظریات رکھنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں؟ Are people so hate-filled in the colleges and universities of there? We have many type of people, and sometimes it's so unexpected, and you wouldn't even think someone would say such hateful things to you. But what we can do is they get all this information from what's it called, the social media, from people who are saying very bad things and about Muslims, about Pakistanis, about anyone associated with Islam, and just because of that, they build this perception, and they're not willing to see anything else. They're blindsided. And as youth, as members of the Muslim community, what we can do is we can reverse this by posting what is accurate on social media. We can show who we really are. We can get out there. We can get education, and we can put ourselves out there and tell people who we really are. And that's really important. We need to put ourselves out there more. No, but people like you, Yasmin, because you are hijab wearing women, right? So this Yes. is something which actually invites these people, you know, and this is something very dangerous. At least جس طرح میں پہلے سے کہہ رہا تھا کہ آج میں سوچ رہا تھا کہ فیملی کے ساتھ ہم باہر نکلیں یا نہ نکلیں, یہ نہ ہو کہ ہم باہر جا رہے ہیں اور پیچھے سے کوئی آ جائے. تو یہ جو ایک فیئر فیکٹر جو ہے, you know, everybody is scared now, and especially the visible minorities. میں ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گا, آج ہی میری سارا دن بات چیت ہو رہی تھی. میرا ایک دوسرا پورٹ فولیو ہے, I'm the chair for the South Asian Association also of London surrounding area. تو مجھے سردار جو سکھ فیملیز کا فون آیا, تو وہ کہنے لگے کہ جی اگر ہم روڈ پہ جا رہے ہوں, خاص طور پہ ہماری لیڈیز, تو وہ ویسے ہی دوپٹہ پہنتی ہیں, ویسے سلوار قمیض پہنتی ہیں. تو یہ ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں یہاں پہ فیل کر رہے, کیونکہ اگر تو فیملی کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے, اور جیسے ابھی تک ہمیں پولیس نے نہیں بتایا کہ اگر پری پلان تھا تو کہ ایک فیملی کو ٹارگٹ کیا تھا, ان کو کیا پتا کون سا مسلم ہے, اٹ مینس کہ ان کے پاس ایڈریسز ہیں کہ کس کو ٹارگٹ کرنا کیا. ادروائز جب روڈ پہ جا رہے ہوں, تو خاص طور پہ جو ہمارے سکھ اور سردار فیملیز ہیں, وہ لوگ جب روڈ پہ جا رہی ہوں, ان کی لیڈیز اور ہماری لیڈیز میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. تو وہ کہتے ہیں ہمیں بھی خطرہ ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو سیف. ابھی میری شام میں ہی بات ہو رہی تھی, اور یہاں پہ لندن میں جو ہے, لندن میں اس وقت ہمارے پاس پچھلے 2 سال سے ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ برمپٹن کے بہت سارے لوگ جو ہے وہ لندن آ رہے ہیں. تو لندن از گروئنگ ایز اے ساؤتھ ایشین کمیونٹی آن اے لارجر بیسس. تو وہ کہنے لگے کہ ہم یہاں آ رہے ہیں, لیکن ہمیں آج کے واقعے کے بعد ہم بھی فیل نہیں کر رہے کہ ہم سیف ہیں, کیونکہ روڈ پہ جاتے ہوئے یہ نہیں پتا, ان کو تھوڑا پتا کہ مسلمان یا سکھ ہے. اور اگر یہ نہیں ہے اور صرف مسلمان ہی کو, تو اس کا مطلب یہ کہ ہر ایک آدمی کا جو وہ ایڈریس ہے is a target. So going back to my previous argument, طارق بھٹی صاحب, جو سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں اس میں, جیسے میں نے کہا نا کہ مختلف کمیونٹیز کو, جو خاص طور پہ جو ویزیبل منورٹیز ہیں, ان کو اب اکٹھا ہونا پڑے گا, ان کو اکٹھا بیٹھ کے الائنسز کے طور پر یہ بات آگے بڑھانی پڑے گی, اور گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالنا پڑے گا. کیونکہ گورنمنٹ کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جس طرح آپ نے شروع میں کہا تھا نا کہ ایک لپ سروس کر دیتے ہیں, ہونٹ سیوا کرتے ہیں, ایمٹی ورڈز ہیں, آگے بس آگے مل گیا آپ کو, میئر آ گیا, فلاں آ گیا, تصویریں کھنچوا لی ہیں, دیٹس اٹ. ہماری کمیونٹی کو بھی اس کو فالو اپ کرنے کی ضرورت ہے, اور کنسسٹنٹ فالو اپ کی ضرورت ہے. ڈو یو ایگری ود اٹ؟ جی بالکل. میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ یہ صرف مسلمان کمیونٹی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ایوری ویزیبل مائنورٹی کا مسئلہ ہے. سو وی نیڈ ٹو اسٹینڈ یونائٹیڈ, اور ہمیں مل کے اس کے بارے میں آواز اٹھانی ہے, اور اس کے لیے جو بھی کانکریٹ ایکشنز لینے کی ضرورت ہے. بیکاز دیکھیں یہ ہمارا ملک ہے, ہمارے بچے یہاں بڑے ہو رہے ہیں, وہ ہماری اگلی جنریشن نے یہاں بڑا ہونا ہے. We can't live in a paranoia all the time looking back at your shoulder that what's going to be coming to us. So for that matter, یہ ٹھیک ہے, اسلاموفوبیا ضرور ہے, لیکن I think اس میں to me every shalwar kameez wearing person, every hijab wearing person, every brown community, every black person, I'm sorry I'm taking names like that, I'm not tagging them like that, but my point is every visible minority group has to come and join us and stand united, and they are extending their cooperation and they're extending their hand. And I think جیسے میں نے پہلے
ने कहा कि ये 4 जिंदगियां तो गई हैं, लेकिन ये 4 जिंदगियां रायगा जाएंगी अगर हमने इनको इनकी जिंदगी के अपने जान देने के बाद इसके ऊपर कोई कॉन्क्रीट काम नहीं किया, हम लोग इकट्ठे नहीं हुए, हमने गवर्नमेंट पे प्रेशर नहीं डाला और हमने उनको नहीं बताया कि कितना सीरियस है ये जो हेट क्राइम है। उसके लिए मैंने सोशल मीडिया पे भी सब लोगों को एक रिक्वेस्ट की है कि डू नॉट इग्नोर, एज यास्मीन बेटी वाज मेंशनिंग अर्लियर, डू नॉट इग्नोर इवन अ स्मॉलेस्ट thing that is turned into a hate crime, whether it's a racial slur, whether it's a comment, whether it's an action, whether it's just somebody is looking at you in different way. So please point out to the authorities, please raise your voice, bring it to the knowledge of the authorities, and isko record pe leke aaye, so that we should tell people, we should let the responsible people know, the people who can take action, people sitting in the parliaments, that how serious this issue is. So for that matter, we need to और यास्मीन बेटा आपको ये बताएं कि मैं और तारिक भट्टी साहब हम लोग लंदन पुलिस के पैनल पे भी हैं और खास तौर पे जहाँ पे बात आती है कि हमारी कम्युनिटी की, तो वी आर वेरी मच ऑन टू दैट। अगर कोई भी आपको 1% भी कहीं पे भी लगे, प्लीज गेट इन टच विद अस डायरेक्टली एंड within 6 hours things will be taken care इंशाल्लाह। Okay, अच्छा शाह, मेरा ख्याल लेट्स कंक्लूड इट, उसके बाद मैं यास्मीन आपके पास भी आता हूँ। शाह, एक चीज मुझे जरा बताएं कि व्हाट इफ, जिस तरह अभी भट्टी साहब ने कहा कि अगर कोई रेशियल स्लर आपके ऊपर थ्रो करता है और आपको स्टेयर एट करता है, सब कुछ इस तरह आपको मतलब है कि आपको हरास करने की कोशिश करता है, स्पेशली इन अ केस लाइक जिस तरह ये यास्मीन है, तो व्हाट आर द ऑप्शंस, क्या करना चाहिए उसे? That's a great question, and it's very topical. I think so. That there's actually a word for that, and we've all experienced them. It's called microaggressions, and that's when you get kind of a weird look from someone, or somebody might throw out a joke that they think is like it's a stereotypical terrorist joke about Muslims or something like that. These are stereotypes, and these are considered microaggressions against minorities. भट्टी साहब अपने आप को जरा सॉरी म्यूट कीजिएगा जरा। So for those cases, I think it's really important. For one thing, I think we need to expose them, and actually in our groups, in our circles, our small communities, if we have people that do mention things like that, or say things that might be hurtful or could be taken as Islamophobic comments, just call them out. Don't be scared to call people out and educate people. I think it's a learning opportunity for people. A lot of times people think they're not doing anything wrong by saying these things. So I think as in our own circles, it's important to call that out. And on a greater scale, Yasmin was saying that there is a lot of activity on social media from these groups. If you get comments and things that might alarm you from, there's actually white supremacist groups on, these channels like Reddit and 4chan and stuff. So it's really important to call that out. If you ever come across it, send it to an authority. At least they can investigate it. If it's nothing, then you've at least, that's the least you could have done. Like for instance, Shah, for instance, let me give you an example. मेरे जानने वाले एक हैं, तो उनकी जो बेगम है वो कहीं बाजार में गई हुई थी, इस मॉल के ऊपर, तो उनका वो जिस तरह वो नहीं होता, वो जो डिसेबल्ड पार्किंग होती है, तो उसमें जैसे उन्होंने पार्क की तो उधर से दूसरे लोग आगे और उन्होंने स्टेयर करना शुरू कर दिया कि कैसे तुम यहाँ पे पार्क कर सकती हो, तुम्हारे पास, तुम तो डिसेबल लग ही नहीं रही हो। अब वो उसके पास सारा डॉक्टर का सारा वो सर्टिफिकेट मौजूद है, सब कुछ है, बट यू सी अब वो क्या करे वहां पे? व्हाट आर द ऑप्शंस? That's a tough situation. I think if you're alone in a situation like that, your safety is the primary concern. So if somebody is aggressive, like is looking aggressive or anything, I actually think that you're allowed to call the authorities in that situation if you're feeling. So, but can you video record them? Yeah, I think that's probably a good. Actually, that's one reason why a lot of these stories that we have never heard about have been coming out to the front a lot too. So that's another great option. Yeah. Then Yasmin, concluding remarks. I just wanted to talk about the hijab because you guys brought it up about this being a threat to the people, and that's why they're targeting us. Today an uncle came up to me and he's like, "Beta, take your hijab off. Never wear shalwar kameez in public. Never do this." And I'm like, "I'm sorry, uncle, lekin ye mera Islam hai aur main isko kabhi nahi utarungi, like never." And Allah will reward me for this. And
like Tariq uncle was saying, we have to push our leaders in our community, our mayor. We have to constantly educate them. We need to tell them what the hijab is. We need to get it out on social media that this is not a threat. This is my religion, and this is my respect to my Allah. You know, I tell you one thing. We live in London surrounding area. यहाँ पे Amish community रहती है, जो कि Amish जब आते हैं, उनकी औरतों ने सर भी ढके होते हैं, वो सारा किया होता है, ठीक है, और वो आते हैं, nobody make any objection. I had this discussion when I was the president for the London Multicultural Club. तो वहाँ ये जब बात हुई तो मैंने उनको ये बताया, मैंने कहा बात ये कि आप उन लोगों पे ऑब्जेक्शन नहीं करते, आप इन पे क्यों ऑब्जेक्शन करते हो? आप उनसे को वो पहले रह रहे हैं, वो अपना निकालें तो हम निकाल देते हैं। तो वजह ये है कि बेटा आपने जो हिजाब लिया, मेरी बेटी भी लेती है हिजाब, इसके अंदर प्राउड है, रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है, तो स्टे विद दैट। I will never. बहुत शुक्रिया। Yes. मैं तो यास्मीन, आई एम प्राउड ऑफ यू, ट्रस्ट मी, और आई एम प्राउड ऑफ योर कमिटमेंट एंड कन्विक्शन, और दैट इज हाउ वन शुड बी, क्योंकि जो उसकी कन्विक्शन है उसके ऊपर वो उसको खड़े रहना पड़ेगा। अदर पीपल मस्ट बी एजुकेटेड, ठीक है ना? Uncle, my baji, she was wearing her hijab, and she lost her life, and the fact that she was wearing her hijab, I'm never gonna take it off because she took so much pride in it, and I'm gonna take pride in it, and I'm never gonna take it off. You should not and you will not, इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शाह, आपका बहुत शुक्रिया, और यास्मीन बेटा आपका बहुत शुक्रिया, और कीप इट अप, ठीक है, स्टे स्ट्रांग, ठीक है, और शमस सही साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा। वंस अगेन आखिर में मेरी तरफ से कंडोलेंसेस, और उस फैमिली के लिए भी माय हार्ट गोज आउट एक्चुअली। यकीन करें, मैं बता नहीं सकता हूँ मैं कितना दुखी हूँ, और आप ही की तरह दुखी हूँ। आपने तो खैर उनको देखा होगा, आप तो ज्यादा दुख फील कर रहे होंगे, लेकिन हम भी दूर बैठे हुए फील कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया।